साइक्लो कन्वर्टर अपन ने कल इस पिछले वाले लेक्चर में साइक्लो कन्वर्टर्स का बेसिक्स की स्टडी की थी। साइक्लो कन्वर्टर बेसिक कैसे काम करता है, कैसे स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है साइक्लो कन्वर्टर्स पे, इसके बारे में अपन ने कोशिश किया था कि कैसे किया जा सकता है और कैसे इसकी वेव फॉर्म्स होती है, ये अपन ने समझने की कोशिश की। साइक्लो कन्वर्टर के जो पॉसिबल सर्किट्स कौन से होते हैं, साइक्लो कन्वर्टर के सर्किट में अपने मिड पॉइंट सर्किट जो है भी पढ़ा और सीखा कि मिड पॉइंट कन्वर्टर से साइक्लो कन्वर्टर कैसे काम करता है, और ब्रिज कन्वर्टर ब्रिज सर्किट से साइक्लो कन्वर्टर कैसे काम करता है, इसको समझने की कोशिश की। साइक्लो कन्वर्टर की जो आउटपुट वेवफॉर्म होती है वो दो टाइप में जो आउटपुट वेवफॉर्म से कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो जो एक ही वेव जो होती है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, एक मल्टीपल वेव्स के कंट्रोलिंग से भी जो आउटपुट दिया जा सकता है, और जो मल्टी जो है साइकिल्स से के अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज दी जा सकती है। तो ये दोनों टाइप की कंट्रोलिंग टेक्निक्स अपन ने सीखने की कोशिश की। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है, वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है, तो डेफिनेटली साइक्लो कन्वर्टर बेसिक्स के नाम से वो लेक्चर है मेरा। आप गो थ्रू दैट पर्टिकुलर लेक्चर एंड फाइंड आउट कि हाउ द बेसिकली साइक्लो कन्वर्टर वर्क्स। टुडे in this lecture we'll try to study the single phase cyclo converter and three phase to single phase cyclo converter, then three phase to three phase cyclo converter. So and somewhat for the 5 minute to 10 minute in the initial part we'll try to repeat that lecture also। जो अपन ने previous lecture में जो पढ़ा था या सीखने की कोशिश की थी, लर्न किया था, उसको 5 मिनट के लिए रिपीट भी करेंगे और उसको कुछ समझने की कोशिश करेंगे, कुछ बेसिक्स वहां से लेने की कोशिश करेंगे। मुझे काफी इयर्स का तजुर्बा है पढ़ाने का और मैंने काफी स्टूडेंट्स को टीच किया है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट एनालिसिस, मशीन कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, और मुझे 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट फैकल्टी मेंबर्स को टीचिंग करने का, डिफरेंट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए या उनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए या इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स के लिए या डिफरेंट इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो डेफिनेटली आपको मेरे इस एक्सपीरियंस से हेल्प होगी, और आप ये लर्न करने के बाद आपको यदि टीचिंग समझ में आ जाती है, फंडामेंटल समझ में आता है, तो गो थ्रू योर बुक्स, टेक्स्ट बुक्स एंड ट्राई टू लर्न, प्रैक्टिस देम, एंड देन यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि यू नो दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक वेल। तो आपको हमारी etestseries.in एक हमारे टेस्ट पोर्टल है, उस पे जाके टेस्ट सीरीज दें, टेस्ट पेपर दे, हर टॉपिक पे टेस्ट अवेलेबल है, टेस्ट दे और अपने आप को देखें कि आपको कितना कंटेंट पे कितना कॉन्फिडेंस है, कितना नॉलेज है और कितना गेन कर पा रहे हैं। हाँ, यदि कम है तो डेफिनेटली प्रिपेयर वेल एंड अपीयर नेक्स्ट टाइम। यू नो, ये नॉलेज और नॉलेज को इंक्रीज करना और इसमें कॉन्फिडेंस गेन करना, ये एक दिन का काम नहीं है। धीरे धीरे स्लोली डे टू डे ऑन स्टेप बाय स्टेप आप इसको गेन करते हुए चले जाएंगे। ये रेगुलरिटी का मैटर है, ये मैटर ऑफ रेगुलरिटी, ये रेगुलरिटी का मामला है। आप यदि रोज कुछ न कुछ ऐड करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज स्टडी करते हैं, रोज समझने की कोशिश करते हैं, रोज डिफरेंट बुक्स डिफरेंट लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, तो आप डेफिनेटली इनको समझ जाएंगे। ओके, अपन पढ़ते हैं सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर ये सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर को अपन समझते हैं, फिर उसके बाद थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर को समझने की कोशिश करेंगे।
सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर में दो टाइप के साइक्लो कन्वर्टर्स अपन ने पढ़े थे, या पहले उसका सर्किट डायग्राम को रिपीट कर लेते हैं। तो दो टाइप के सर्किट डायग्राम अपन ने पढ़े थे सिंगल फेज में। एक था मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को यहाँ से इनपुट सप्लाई एसी मिल रही है और आउटपुट जो सप्लाई है उसको मिड पॉइंट कनेक्शन है। मिड पॉइंट कनेक्शन के अकॉर्डिंग ये लोड लगा है। ओके, इस लोड में ये P1 है, ये N1 है, ये P2 है, ये N2 है, ये इनकी नंबरिंग है थैरिस्टर्स की। दिस इज द लोड। एक बार ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है तो थोड़ी देर बाद में ये टर्मिनल पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अगले टाइम में अगली आधी साइकिल बाद में, अगली आधी साइकिल में इंडिया की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हर 10 मिली सेकेंड के बाद में ये पोलरिटी चेंज हो जाती है और अगली हाफ साइकिल में ये पोलरिटी जो है ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। इस टाइप में पोलरिटी चेंज हो जाती है। तो एक बार पॉजिटिव साइकिल रहती है, एक बार नेगेटिव साइकिल रहती है, फिर पॉजिटिव होती है, फिर नेगेटिव होती है, फिर पॉजिटिव होती है, फिर नेगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव होती है तो ये P1 फॉरवर्ड वाइज में होता है, ये नेगेटिव होती है तो N1 फॉरवर्ड वाइज में होता है। ऐसे ही ये पॉजिटिव होता है तो P2, ये पॉजिटिव होता है तो P2 फॉरवर्ड वाइज में होता है, ये नेगेटिव होता है तो N2 फॉरवर्ड वाइज में होता है। तो आप P1 और N1 दोनों को ही ऑन कर सकते हैं, देखना होता है कि कौन सा फॉरवर्ड वाइज, और P2 और N2 दोनों को ही ऑन कर सकते हैं, देखना होता है कौन सा फॉरवर्ड वाइज है। अब अपन बात करते हैं स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। स्टेप डाउन, ये मैं क्या कर रहा हूं, प्रीवियस जो लेक्चर अपन ने लिया है उसको रिपीटेशन कर रहा हूं। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में ये दो है, आधा आधा जो वोल्टेज है दो पार्ट में डिवाइडेड है और दोनों की पोलरिटी एक दूसरे की उल्टी होती है, इसलिए मैं पॉजिटिव साइकिल का जो वेव फॉर्म ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, नेगेटिव साइकिल का वेव फॉर्म जो है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। दोनों साइकिल्स का एक साथ जो है वेव फॉर्म ड्रॉ करें। ऊपर में यहाँ P1 पॉजिटिव होता है, या P2 पॉजिटिव होता है, या P1 पॉजिटिव होता है, या P2 पॉजिटिव होता है। यहाँ पे P1 जब पॉजिटिव होता है, P1 जब पॉजिटिव होता है मतलब ये पॉजिटिव होता है, उस टाइम पे ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है तो N2 पॉजिटिव होता है। तो N2 यहाँ फॉरवर्ड वाइज में होता है, या N1 फॉरवर्ड वाइज में होता है, या N2 फॉरवर्ड वाइज में होता है, या N1 फॉरवर्ड वाइज में होता है। ये इनकी फॉरवर्ड वाइज में। अब ऑन करना है तो मैं क्या करता हूं, इसको कुछ डिले एंगल के साथ इसको ऑन कर देता हूं तो यहां से ये ऑन हो जाता है। इसके बाद इसको P2 को मैं ऑन कर देता हूं तो ये डिले एंगल के साथ ऑन हो जाता है। इसके बाद मैं N2 को ऑन कर देता हूं तो ये डिले एंगल के साथ N2 ऑन हो जाता है, फिर ये डिले एंगल के साथ N2 ऑन हो जाता है। फिर दोबारा से P1 को ऑन कर देता हूं तो यहाँ इस डिले एंगल के साथ P1 ऑन हो जाता है। तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। फिर कोई डिले एंगल के साथ P2 ऑन हो जाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। ये डिले जो एंगल है वो फायरिंग डिले एंगल होता है। ये R लोड के केस में इस टाइप की वेवफॉर्म होगी, R लोड के केस में इस टाइप की वेवफॉर्म होगी। यदि RL लोड होता है तो वेवफॉर्म थोड़ी बदल जाती है। RL लोड होता है तो वेवफॉर्म में नेगेटिव साइकिल आ जाती है। नेगेटिव साइकिल में ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता तो ये नेगेटिव साइकिल में जाती है। ये डिसकंटिन्यू और कंटिन्यू दो टाइप के कंडक्शन होते हैं। तो डिसकंटिन्यू कंडक्शन में वेवफॉर्म पूरी नहीं होती है, थोड़ी डिसकंटिन्यूटी है, इसको डिसकंटिन्यू करेगा। ये यहाँ से यहाँ तक जाती है, इसमें ये डिसकंटिन्यू आती है और यहाँ से यहाँ तक जाती है। और नेगेटिव वाले में ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाती है और फिर जो है ये ऐसे, और यहाँ पे ये नेगेटिव में नीचे आती है और यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ हुई तो ये नीचे की तरफ आती है, फिर ये जो है नेगेटिव साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है।
फिर ऊपर की तरफ जाती है और ये साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आरएल लोड का केस। ये आरएल लोड का केस। तो ये आर लोड हुआ, आरएल लोड हुआ, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस टाइप की वेवफॉर्म आउटपुट पे रहेगी। ये मैंने क्या किया है कि एक साइकिल जो है यहां तक कंप्लीट होती है, ये दूसरी साइकिल यहां तक कंप्लीट होती है। इस दो साइकिल में आउटपुट में जो है मेरी ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। इसकी यदि करंट वेवफॉर्म ड्रॉ करें, इसकी यदि करंट वेवफॉर्म करें तो करंट यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां बढ़ी, इसमें फिर पॉजिटिव साइकिल मिलेगी, करंट और बढ़ गई, यहाँ करंट कुछ बढ़ी, इसमें फिर पॉजिटिव साइकिल मिली, करंट और बढ़ गई। यहाँ से नेगेटिव साइकिल मिली तो यहाँ से करंट पहले जीरो होती है, फिर करंट कुछ नेगेटिव होती है, फिर नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल दोबारा मिल जाती है तो करंट फिर और नेगेटिव होती है। इससे पहले ये नेगेटिव रहती है। इसके बाद यहाँ जो साइकिल होती है, यहाँ पे करंट की पीक वैल्यू होती है, यहाँ करंट की पीक वैल्यू आती है। इसके बाद जो है ये पीक से डाउन होने लगती है, इसके बाद ये पीक से डाउन होने लगती है और यहाँ तक जाते जाते ये जीरो हो जाती है, फिर ये नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है, यहाँ तक एक साइकिल मिलती है, यहाँ के बाद में दूसरी साइकिल मिलती है, दूसरी साइकिल में करंट थोड़ी और बढ़ती है। इस टाइप में करंट में वेरिएशंस आते हैं। ओके, सो दिस इज द वे the current in output will vary. This is the output current. I note output current. I note will vary. This is the output voltage. We note. So this is the way we can explain the output of a step down cycloconverter. This is the output voltage of a or output current of a step down cycloconverter. Now we can explain the output of a step up cycloconverter. The drawback in this particular circuit is only the half of the power is available, so the efficiency and the power rating of this circuit is 1/4. Because the half the power, half the current, so the power rating of this particular circuit is 1/4. That's why we are not using this circuit, we are using the bridge circuit. So in a bridge circuit, this is the AC source, here the bridge, this is the load. So one the positive path, other is the negative path. But we also know, the thyristor required anti-parallel connected, the thyristor, so there is the anti-parallel connected, the thyristors also, the same string with the anti-parallel, the reverse connecting. This is it. This is the way we can explain. This is the way we can explain the working. At the circuit diagram and the working is, this is the P1, this is the P2, this is the P3, this is the P4. This is the N1, this is the N2, this is the N3, this is the N4. Okay, so once the P1, P2 and the P3, P4 they works. So same, the working function of this and this is the same. The difference is only here the output voltage, if the current is coming from this path, current is coming through this path, then this is the positive and this is the negative. So the voltage appears across the load is the source voltage, and here the voltage appears across the load is V01, that is the half of that only, and this is the V02.
So the half of the cycle, they half the voltage, other half of the cycle, half of the voltage. So whatever the rating of the transformer, at the half 50% the transformer you utilizing at a time. So the underutilization of the transformer, underutilization of the equipment, underutilization of the transistors, thyristors, because the half the power, half the circuit is working at a time, half the circuit is working at a time. But here even the whole the circuit, even the whole the voltage, full the voltage, source voltage, the whole the current, the total source current passes through the load. So this is good one as compared to this one. Okay, this is the way. Now I will try to explain step up cycloconverter. So in a step up cycloconverter, we will try to explain, you know, there is a positive and negative two cycles, positive and negative two cycles. Okay, this is. So here P1 works, here the P1 works. Now P1 get commutated, P1 get commutated, and here when the P1 is positive, N2 also the positive. So N2 works till this one. So N2 works, and after the N2, then P1, then N2, then P1, like this. So this is the output voltage. So here the P1, here the N1, N1, here the P2, here the N1, here the P2, like this. Here are the N1. So this is the way P1 N2, P1 N2 they works. So this is the whole one cycle of the input source. So here the output voltage is, output frequency is the one cycle, then this is the 2 cycle, this is the 3 cycle, this is the 4 cycle, this is the 5 cycle. So 5 times of the source frequency. So it may be the 3, it may be 4, it may be 5, it depends upon. So as per the switching, we can convert the frequency, the output frequency, which is higher than the input frequency. 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, as per requirement. So this is about the step up cycloconverter. This is about the step up cycloconverter. If we are taking the RMS value of voltage of the step up cycloconverter or the step down cycloconverter, it is the same. If we are taking the RMS value of the step up and step down cycloconverters, they are the same. Now we are taking single 3-phase to single phase cycloconverter. 3-phase to single phase cycloconverter. It is 3-phase to single phase cycloconverter. So here the 3-phase means 3
phase supply, and we are converting the 3 phase to the single phase, 3 phase to single phase. So one thyristor, other is the thyristor, and third is the thyristor. They are connected, and this is the load. Another one is the thyristor, second is the thyristor, third is the thyristor. 1, 2, and 3. One, two, three. They are known as positive group. Positive group. This is negative group. This is the load. So this is the way we can convert the positive and negative group thyristors. What the difference in the firing scheme? Suppose that this is the fired at the angle alpha. This should be fired at the angle alpha plus 120 degree. This should be fired at the alpha plus 240 degree. This should be fired at the angle of alpha plus 180 degree. It is the negative group. So the difference is 180 degree. So this should be fired at the alpha plus 120 degree plus 180 degree. And this should be fired alpha plus 240 degree plus 180 degree. So this is the firing scheme. So whatever the firing angle, this is the plus 180 degree, this is the firing scheme, this plus 180 degree, this is the firing, this plus 180. So this is the way we can fire. Now we'll draw on the waveform diagram how the 3-phase cycloconverter give the single phase output. How the 3-phase cycloconverter will give the single phase output. For that we'll draw the waveforms. So this is the waveform of phase A. This is about the waveform of phase A. Okay. Now this is the waveform for phase B, which is 120 degree phase difference. 120 degree phase difference. Okay. The third wave is further 120 degree phase difference. So it is further started from here. It is of 120 degree phase difference. And like this. So these are the 3 waves. This is the 3 phase. So the 3-phase waveform is, the 3 waves are 120 degree in phase difference from A phase to B phase and from B phase to C phase. So there is a difference of 120 degree in between A to B, B to C, C to A. Now how the output voltage comes? Suppose that this is get fired over here. So the first delay, the firing delay is approximately the 90 degree. So this gets fired over here. So the output voltage comes out approximately 0. Then the second gate fired over here, where the firing angle is less at the firing angle. Firing delay.
suppose that for one get fired over here, this get fired over here. So it was this one, it was this one, it is fired over here, it was fired over here. So it is like this. Second is fired over here, second is fired over here. Second is fired over here. So this is the output voltage. Third is fired over here. No any firing delay. That is this one. Okay. Then the middle portion having the higher value. Then further the lesser the value. So further decrease the value, the next one fired over here, and next one the fired over here, like this. So in this way, we can say the output voltage comes, the waveform of the output voltage comes like this one. Like this. More the voltage, and more the voltage, the more the average value in the middle section. In the middle section. So we can say the output is like this one. Here is this one. So we can eliminate this. Eliminating this, we are eliminating this, so you can clearly see what kind of the output that you can see or hear on this waveform diagram, what kind of the output comes out. What kind of the output comes out. This is the output. This is the output. This is the very high value of the output. So this is the way you can explain and you can understand the output voltage. It is very fantastic wave, fantastic output wave. Here the average is approximately 0, here the average is higher 1, here the average is output is 0. So the wave is like this one, here the average is lesser, so it is 0. Here the average is lesser, so it is approximately 0. So here average is higher. Okay. So this is the way this 3-phase waveform is converted into the single phase. And this is the equivalent circuit diagram of the 3-phase. Okay. How we can find out the output one? How we can find out the output one? Okay, first we will try to understand the 3-phase and then we are taking the common output equation.
and that is applicable for all kind of the 3-phase, single phase or whatever. So now the 3-phase to 3-phase. So there is a 3-phase to 3-phase, half bridge, full bridge. 3-phase to 3-phase, half bridge, and 3-phase to 3-phase full bridge. So firstly I am draw 3-phase to 3-phase schematic diagram. 3-phase to 3-phase schematic diagram. This is the positive one. This is the negative one. This is the one phase. This is the positive one. This is the negative one. This is for another phase. This is the positive one. This is the negative one. This is for the third phase. And here the load, this is the one phase load, this is the another phase load, and this is the third phase. Okay, these are the positive groups, these are the negative groups, P and positive groups, negative groups. One is the positive groups. This is not a circuit diagram, this is the schematic diagram, scheme, this is the scheme only, not the circuit diagram, not the circuit diagram, it's the scheme only. Now I will draw the circuit diagram. How I will draw the circuit diagram? Three phase and 3-phase half bridge. Three-phase half bridge. This is for positive groups from phase A, from phase B and from phase C. And there is an inductor which is connected in between the positive group to the negative group, and then a negative group. This is the one phase. This is the for the second phase. This is for the third phase. Okay. This is one for one phase. For the second phase, this is the one, this is the second, this is the third. They are the positive. And this is the intergroup inductors. This is the one, this is the second one, and this is the third one. This is the second phase. Now the third phase. This is the one, this is the second, this is the third. It is for positive group. And this is the interphase inductor. This is the one positive group, negative groups. One, this is the second one, and this is the third one.
Okay. So this is for phase A, this is for phase B, and this is for phase C. So here one the phase load, here the another phase load, here the third phase load. So this is 3-phase half bridge. This is 3-phase half bridge cycloconverter. It is the 3-phase to 3-phase half bridge. 3-phase to 3-phase half bridge cycloconverter. How much SCR are required? 3, 3, 6. 6 for A phase, 6 for B phase, and 6 for the C phase. So 6, 6, 6 means the total number of the thyristors required. They are 18 in number. 18 in number. So this is the way we can differentiate. 18 in number. So the difference in between the firing scheme is 20 degree. So if it gets fired over here alpha, it should be fired at alpha and 120 degree. It should be fired alpha and 240 degree. It should be fired alpha plus 180 degree. It should be fired alpha plus 180 plus 120 degree means 300 degree. 300 degree. And it should be fired alpha plus 240 plus 180 means 300 plus 2 means 420 degree means 120 degree. Okay, it should be fired alpha plus 20 degree. It should be fired alpha plus 140 degree. It should be fired alpha plus 260 degree. It should be fired alpha plus 40 degree. It should be fired alpha plus 160 degree. It should be fired alpha plus 280 degree. And in between these two 180 degree, in between these two 180 degree, in between these two 180 degree. So 280 degree plus 180 degree, 1 alpha 280 degree plus 180 degree. And this would be alpha plus 160 degree plus 180 degree. And for this one alpha plus 140 degree plus 180 degree. This is the firing scheme. Easy. Very easy, very systematic, very sequential. Only the will consider they should be fired in sequence. We have to take care of the sequence of operation. So in a whole cycle, that is 360 degree, each and every one will be fired, and the firing difference is 20 degree in between one to another. Okay, this is the way. So this is 3-phase to 3-phase half bridge. Now I am drawing the 3-phase to 3-phase full bridge. Now I am drawing the 3-phase to 3-phase full bridge. So in a 3-phase to 3-phase full bridge, the number of SCR of the switching devices required twice as compared to 3-phase to 3-phase half bridge. So in a 3-phase to 3-phase half bridge required 18. So 3-phase to 3-phase full bridge required 36. So this is 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. What the 3 means? Here one thyristor. Here another one the thyristor. Here and third one the thyristor. They are connected like this. Here the one thyristor, and another one thyristor,
Here the third one, the thyristor, and they are connected like this. Okay, they are the negative group. They are connected like this: the one thyristor, the second thyristor, the third thyristor. The one thyristor, the second thyristor, the third thyristor. And there should be interconnecting inductor, intergroup inductor, intergroup inductor. Here also the intergroup inductor. This is for phase A. Similarly, here the thyristor, here the thyristor, here the thyristor. Here they should be connected. Okay. Here the anti, here the anti, here the anti-direction, reverse direction, and they should be connected intergroup like this. And here 3 thyristors. You know, in a 3-phase, the 2 thyristor in phase 1, 2 in the second, and 2 in the third. So they are the 6. They are the positive group, and 6 are the negative group. 2 here, 2 here, and 2 here. So 6 in positive group, 6 in negative group. So in a phase there are 12, and they should be connected to a phase. Here this should be connected to a phase. Okay, then here the one, anti, anti, anti. Okay, there is a intergroup inductor, and there should be a load, and it should be connected like this. So this is the phase A, this is the phase B, and this can be represented like this. This is a switch, this is the second switch, this is the third switch. The one switch, the second switch, the third switch. They should be connected like this. And here the reverse directional switch. Okay, so these are the switches. You know, they're the same. These are the switches, and these are also switches. It is only the way of representation, different way of representation. It is only the different way of representation, but you know, all are the same. So they should be connected like this. A load is connected like this. A load is connected like this. So this is the 3-phase system.
This is the three phase system. The phase A, phase B, phase C. It may be the star connected, it may be delta connected. Okay. So this is three phase to three phase full bridge, not the half. This is the full bridge. This is the three phase to three phase full bridge. This is full bridge. Cycloconverter. And how much SCR are required? 3, 3, 6, 3, 3, 6, 12, 12 and 12, 36. They are positive group, they are negative group, they are positive group, they are negative group, they are positive group, they are negative group. Okay. The sequence of the firing is alpha plus 120 degree, alpha plus 240 degree, alpha plus 180 degree, like this, alpha plus tan. What the difference? Alpha plus tan degree. Why did 10 degree? Because there are 36 SCR. 36 SCR. The sequence of operation is every 10 degree the firing delay. So there is sequence of operation. Okay. And then difference of 120 degree, then difference of 120 80 degree, on like this. So this is the schematic diagram. This is the sequence of operation of the three phase. Now I'll draw the output equation of this three phase cycloconverter or n phase cycloconverter. The output equation of n phase cycloconverter. Output equation of n phase cycloconverter. You know the output waveform diagram is like this. It is higher, then it is more, like this one. It is, then 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 it is. This is the way the output voltage will achieve. So we are taking the center position, and this will be fired over here. So for the three phase, the conduction for three phase conduction angle is 120 degree. 120 degree means 2 pi by 3. So if we are taking from the center position, so here conduction is pi by 3 minus, so here position is plus pi by 3. So 3 is 3 phase. So 3 is 3 phase. So it is for the 3 phase, it is pi by 3. For n phase, if we are taking this the symmetrical wave on both the side, symmetrical wave both the side, symmetrical wave both the side, then this side is
pi by m, not 3, it is for 3 phase, pi by m for m phase, and here also from this center position it is the minus pi by m, so it is pi by m plus. But here you know that this is the delay angle, not it fired over from here, it fired out here. So this is not fired over here, it is fired over here. So this is the firing delay, and that is alpha. So it fired over here, then it is also fired over here. It extinguished over here. So it is minus pi by m plus alpha to pi by m plus alpha. So this is the way we can find out the average value. So the value is comes out. The value is comes out from the calculation. We can easily find out the average value is VOR is equals to you know it is 1 upon 2 pi by 3, so it is 2 pi by m for the n phase. Integration minus pi by m plus alpha to pi by m plus alpha. Vm cos of omega t d of omega t. This is the average value. We are taking from here. If we are integrating this, then it is comes out mvm upon 2 pi. Integration of cos is sine of omega t, and taking limit minus pi by m plus alpha to pi by m plus alpha. So it is equal to mvm upon 2 pi sine pi by m plus alpha minus sine minus pi by m plus alpha. Az equals to we are simplifying this, then it is equals to mvm upon 2 pi. This is the sine A sine B, so it is sine A cos B sine pi by m cos of alpha plus sine alpha sine A cos B cos A. Cos A means cos pi by m sine alpha, and here it is plus this minus this, so it is equal to sine pi by m cos alpha minus cos pi by m sine alpha. So this and this get cancel out, so it becomes VOR output voltage is mvm upon 2 pi. It is 2 sine, so 2 get cancel out, so it is sine of pi by m cos alpha. So this is the value. So the peak value is V maximum peak, that is mvm upon pi sine of pi by m. This is the maximum peak value that we can easily find out. That can be easily find out the output value of a m phase cycloconverter.
M phase cyclo. So this is the way we can find out the M phase cycloconverter. Now we can understand the 3 phase to 3 phase cycloconverter with the waveform diagram. How the 3 phase is converted into the 3 phase with the waveform. This is the 3 phase to single phase waveform diagram. How the 3 phase is converted into the 3 phase as per the waveform diagram. So draw the 3 phase waveforms. And negative off also. Firstly draw the positive only. Then the second wave will start from here. And third one is this is the third one. And you know, in 3 phase to 3 phase there is the positive group and negative group both are. So the every phase having the positive portion and negative portion, so this is the negative portion. The red also having, you know, they are all having the negative portion. Then blue also having the negative portion. Like this. Okay. This is the way we are having the positive and negative portions. How the 3 phase will create? To create the 3 phase, we require 3 colors, the 3 output colors. So, the one color, the one get fired over here, next one it get fired over here, next one it fired over here, fired over here, next one it is fired over here, next one it is fired over here, next one it is fired over here, like this. This is for one phase. Similarly for the second phase and similar for the third phase. You know, the small delay, more delay, more the delay, more and the delay, then small delay, then small delay, then smaller delay. This kind of the delay is continuously providing. So we can convert 3 phase. So the 3 phase to 3 phase conversion, 3 phase to single phase conversion, single phase to 3 phase conversion. You know how the single phase to 3 phase conversion, how it takes place. How it takes place? Single phase to 3 phase. You know, this is the single phase, this is the positive one, this is the negative one,
This is the for one phase, this is the positive one, this is the negative one. This is the for phase B, this is the positive one, this is the negative one. For the phase. So here the one phase, here the another phase, here the third phase. Connect like this. It is single phase to three phase conversion. It requires 6 SCR. It is half bridge type. When we are taking the full bridge, then it is like this. It is full bridge, single phase 2, 3. Here we can connect the intergroup inductor. Here we can connect intergroup inductor. And here we can connect the loop. This is the way. It is three phase, single phase to three phase, full bridge convert. It required 4, 20, not 20, 12 SCRs to connect and 3 intergroup inductor. What is the use of an intergroup inductor? To minimize the circulating current in between the group. To minimize the circulating, to avoid the short circuiting, to avoid the danger and damage. Okay. So they provide the safety. So this is the use. So this is the way. So this is the way you can understand how the cycloconverter works. It is single phase to single phase, it is the single phase to three phase, the three phase to single phase, three phase to three phase, three phase to three phase, half bridge, three phase to three phase, full bridge. Any kind of this three phase or single phase to three phase to three phase kind of this conversion will take place in the cycloconverter circuits. So the cycloconverter is a very lengthy circuit one. You know that the sequence operation we have to take care. The number of the SCR are more. Another way to convert the cycloconverters, they are DC link cycloconverter. So another way of a cycloconverters are DC link cycloconverter. They are known as DC link cycloconverter. How the DC link? It is AC. So AC, the AC. So AC to first convert into DC, and DC is further converted into AC at a different frequency, at the desired frequency. So there is a DC link in between. So it is known as DC link cycloconverter. So AC to DC converter is converter, and DC to AC is the inverter. So converter, inverter, back to back, they convert AC fixed to variable. Okay. They are DC linked cycloconverter. So here we can control the firing angle and providing the cost voltage control.
Here we are controlling the firing angle and control the frequency control. So two state controls are there. So both the controls can be easily achieved. Both control can easily achieve. So this is very easy circuit as compared to direct AC to AC conversion. AC to AC conversion with a high frequency, high harmonic, higher the switching. But in this one, easily frequency and easily harmonic control can be provided. Okay, so this is the whole about the cycloconverters. Definitely you enjoy the lecture of a cycloconverter, three-phase cycloconverter. You get understand the topic. आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, आपने enjoy किया होगा और मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा है साइक्लो कन्वर्टर्स पे। और आपको यदि और डिटेल में चाहिए तो मैं साइक्लो कन्वर्टर्स पे और प्रॉब्लम लूंगा और डीसी लिंक साइक्लो कन्वर्टर को और एक लेक्चर में डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। आप उस लेक्चर को भी आगे देख सकते हैं, डेफिनेटली आप उसको लर्न कर सकते हैं। बट ये साइक्लो कन्वर्टर बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, यूनिवर्सिटी को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसके थ्रू जाइएगा और इसको लर्न करने की कोशिश करिएगा और आप एक दूसरे से डिस्कस कीजिएगा इसको, और दोबारा से इसको जो है लर्न करेंगे, दोबारा से इसको देखेंगे तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। डेफिनेटली यू एंजॉय लॉट। मैं शीशराम ओला पिछले 22 साल से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल्स और इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। आप लोग मेरे साथ फंडामेंटल सीख सकते हो सब्जेक्ट को कैसे फंडामेंटली रीड करना है, सब्जेक्ट को कैसे अपना सब्जेक्ट बनाना है, ये मेरे साथ सीख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यू विल गेन अ लॉट from my lecture. Definitely you'll enjoy a lot from my lectures.